May the peace of the Lord, grace, and Holy Spirit be with you all. We welcome you at the Holy Sanctuary Ministry. Thank you, Father, for Heavenly Father, for this wonderful day and wonderful time, and for this platform that you have provided us. We can approach the throne of grace every time we want. And there's no limitation in the mighty name of Lord Jesus Christ. Thank you for this privilege once again that you brought into our life, Lord. So we can stand here and we can enter into your courts with the praise and into your gates with the thanksgiving, Lord, so we can honor and glorify your name, Lord. Because you are the only God who deserves honor and glorious praise, and we are asking, Father, come and take a charge and let your presence be here, Lord, and pour your spirit onto us, breathe us, Lord. Pray for everybody's, Lord. Blessing be upon and blessing and grace be with everybody's, Lord. People who encounter us and people who are going to join us, Lord. Father, I pray for your blessing be upon them, Lord. I pray for that you protect them, keep them safe, all under dry protection. Lord, mercy, grace, and Holy Spirit be with everybody's, Lord. Once again, Father, we worship and honor, glorify your name, Lord. Come and take a charge in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. We'll worship the Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise, we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. All the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. Oh, all the earth will shout your name, these hearts will cry, these bones will sing, how great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Hallelujah, Father. Hallelujah, Son. Hallelujah, Spirit. Praise be your name, Lord. Blessed be your name, Lord. There's no other God before you. There's no one like you. Love us so much, Lord. Who cares about us, Lord? Thank you for this wonderful time and wonderful day that we come and gather here, Lord. There's no other God who loves us so much, Lord. Who cares about us, Lord? I come before the throne of grace by giving you all the honors, the glories, the praise in your name, Lord. I come here, Father, that you give us all your love, mercy, grace, and abundance be with us, Lord. Let this meeting go smooth and effective in the mighty name of the Lord Jesus Christ. Amen. The scriptures say, love your enemies, do good to those who hate you, Luke 6:27. Today we are talking about why God wants us to love our enemies, why we have to love our enemies. And as we all know that, in the Christian's life, it is always, there's always
not easy battle. There's not always easy for Christians onto the earth, Lord. Christian has to go above and beyond what is they wanted. They have to die for themselves. They have to die for to gain a good stuff, good, and the glory and the victory, as the Jesus say, to die. They have to die before they get a crown of glory, because the Christians are not ordinary people. They are heavenly people. As the scriptures say, how they have to die. The Christian's life is onto the earth is not easy, like I said earlier. So to die, which is the scriptures say, John's 12:24-27, they have to die. They have to die every day with their wishes, their against their wishes and against their wills, because something which is they don't have to do for them to please them, to please the other, to please the Heavenly Father, because our Heavenly Father is like that. So if we are the child of God and to Lord Jesus Christ, we have to die in ourselves, and in order to get again, as Jesus died for others to gain his life, so do the Christian has to die. That is why Jesus wants. That is why the God wants us to love our enemies and do good to those who good, who hates us. So we have to pray in order to say that our Heavenly Father is a merciful Father, and He doesn't count everybody's mistakes, and He always wants the people who are away from them. So He wants them to come home. So He's a merciful Father. So He wants us to be a merciful. And the Christian, like I said, the Christian has to die, as John 12:24-27 say, truly, truly, I say to you, unless a grain of the wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there my servants will be also. If anyone serves me, the fathers will honor him. Now in my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from the hours, but for this purpose I have come to this hour. So we have the same mission, we have the same purpose, because we are the follower of Christ. And Jesus is saying that, the seed is a single by himself, and he will not bear the fruit unless he dies in the ground. So he wants us to die, and he wants us to bear a fruit, because we cannot have eternal life unless we die for ourselves. We have to deny ourselves and our happiness. We let go our happiness, and we have to die for the others. And that's how, but as a follower or believer in the Christ, obey our Lord Jesus Christ, because we have to obey our Lord Jesus Christ. We have to obey our Heavenly Father, because we have to know what our Heavenly Father is like. Because if He wants us to be likeness of the Jesus, we have to obey Him, and we have to follow Him, and we have to deny ourselves, and we have to love our enemies, because Jesus loved everybody, regardless of what they were. He died for all creation. He died for everything, whether he was rejected down there, but he still loves, because the love is the enemy of the hate. So we have to love the other regardless of what happens to us. We still have to love others. And this is the commandment of our Lord Jesus Christ. When we don't do that, we disobey our God, and we do not follow our gods, and we do not belong to our God. We do not belong to Heavenly Father. This is what Jesus wants us to love our enemy. So then the Father in heaven loves us. So He will give us the eternal glory. He will give us eternal life. So then we will be living
when we die for God, we will get our life back from Father. So then we will have a glorious body like Jesus Christ, and then we will have a place. That is how that's why the Jesus, because there's nothing will Father say to us which is not benefit us. So this is how it will benefit us, when we do love our enemies and do good to those who hate us. So in our fully completion, like this is also our fully completion, uh, 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 in our fully completion, we have to be believer of Christ, because when we are the believer of Christ, in order to be a fully complete in the Father's, and walk with the God, uh, uh, God's the high standards, because this is the standard of the God. These are the standards set for us, because God will never ask us anything which is not going to benefit us in the wrong run, which will not, because He knows how we will get the things done through Him, because He has the control and He wants us to do that. We all see our God high standards. We all know His standards, and we have to obey them. Whether they are hard to obey and they are hard to keep it, but this is what the life is, because without endurance, without suffering, without endurance, you will not gain any strength, or you will not gain any health or back, because there are, without the crown, without the nailing down onto the cross, without the nailing down, and without having the crown of the throne on your head, you will not gain the glory, because you have to go through this trial of the Calvary, because if we don't do that, then we don't belong to our Father, because Christian's life is onto the earth, is always onto the hill of Calvary. They are walking with the cross the way to the Calvary to get their life back from Father. This is how Father wants us to love our enemy. There are reasons, because God will never say anything which will not benefit us. God will, because He loves us so much, He tells us, what you have to go through, and before you get anything, a place in a heaven, or before you do anything, before you come to Him, because He's merciful Father, and He will not put us into the test which is not bearable for us. He will put us only to the limit of test. So the Father is saying, and our enemies, and do good to them, which is He's saying that love our enemy and do good to them, because our God is merciful and does not stop showing His blessing upon us, because Father is the merciful, regardless of people like Him, regardless of people come to Him. He's merciful to everybody. He's merciful to everyone. This is the reason God wants us to love our enemies. And as the scriptures say in the Psalm 103, He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. God is the one who, like the other day we heard that the God shine His sun upon good and bad people at the same time. He's merciful to everybody's, and He does not count anybody's mistake. So regardless of what what will happen to us, if we are the believer of Christ, in the Christ, and if we are the children of God, we have to keep in our mind why we have to love our enemy, because God loved His enemy. And if we are coming out from God, so do we have to be like Him. And if we follow His children, we have to love our enemy, and regardless of what they do, because He does not count our mistake. As the scriptures say, He does not deal with us according to our sins. He does not count our sins. Yet we are sinner, He still loves us. Yet we are away from Him, still shine His sun upon to us. Yet He still care about us, Lord. Yet He still provide us. Yet He still give us everything, regardless of whether we are in Him or we are not in Him. So if we really want to be a follower of the Christ, and we want to love the God Father in heaven, then we have to be like Him.
because he's a merciful Father. And our likeness into the God will only be will be complete in completion when we will be merciful towards other people. We will be forgiving our enemy. We will be loving our enemy, because we will be doing good to those who hate us. This is the one attribute. This is the one attribute of the God, because God does not count other mistakes. He always forgive everybody's, and he always come to help everybody. So do he wants us to be like him. When we want to be like him, we have to love our enemies. So God bless you all. आप सबके साथ, और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आज फिर इस खूबसूरत वक्त के लिए जो खुदा ने मेरी और आप सबकी जिंदगी में दिया कि हम खुदावंद के हुजूर इकट्ठे हो सकें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। हम पाक कलाम में बहुत सारी बातें सुनते हैं, करते हैं और सुनाते हैं, और मैं समझता हूँ अभी जब सिस्टर नुसरत बात कर रही थी और इस बात को पढ़ रही थी, इस हवाले को पढ़ रही थी, जो लूका की इंजील उसका 6 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है कि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है, और वो अपना सूरज जो है नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। और इसी तरह एक वीडियो मैंने पास्टर रशीद की भी देखी जिसमें वो यही बात करते हैं कि वो नाशुकरों और बदों पर भी मेहरबान है। और ऐसी बातें जो पिछला वीक गुजरा जब मैं कलाम को पढ़ता था तो मेरी नजर से गुजरती थी, और मैं इन बातों को आपके सामने आज फिर रखना चाहूंगा कलाम में से। और आप सब लोग कलाम पढ़ते हैं और कलाम को पढ़िएगा, ताकि ये जो बात है मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि पाक कलाम कह रहा है। एक बात मैं और करना चाहता हूँ, जो व्यूअर्स इस कलाम को, इस रिकॉर्डिंग को सुने, तो जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया पर खिदमत करते हैं, मुनादी करते हैं, तो उन्होंने जो पाक कलाम में मौजज़ात लिखे हुए हैं वो 35, 36 है। तो जब मौजज़ात की डेफिनेशन या मेरिकल की डेफिनेशन हम करें तो ऐसी चीजें हैं हमारे सामने जो खुदा का पाकरू करता है, वो अनहोनी चीजें, सुपर नेचुरल इवेंट्स जो हमारी जिंदगी में या उस वक्त खुदा यीशु मसीह ने किए, उसको मेरिकल्स कहते हैं, मौजज़ात कहते हैं। और कई दफा हम बहुत सारे ऐसी बातों को मौजज़ात से रिलेट करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा पानी पर चलना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि कोई चल ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही दुनिया में हस्ती चली है और वो हमारा यीशु मसीह है, जो समुद्र पर पानी पर चलता है और किश्ती में सवार होता है अपने शागिर्दों के साथ जाने के लिए। दैट इज काइंड ऑफ अ मेरिकल, मौजज़ा है। और फिर अब जब मौजज़ात को देखते हैं, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा कि देखो, लाजर को जिंदा करना, कोड़ी को पाक साफ करना, बुदरू गिरफ्तार लोगों को बुदरुओं से आजाद करना, ये खुदा यीशु मसीह के मौजज़ात हैं, सुपर नेचुरल चीजें हैं। ऐसे मफलूट ज़्यादा लोग खुदा यीशु मसीह के पास आते हैं। 3 जो है पाक कलाम हमें बताता है कि 3 मफलूट ज़्यादा लोग खुदा यीशु मसीह के पास आए, जिनको खुदा यीशु मसीह जो है तंदुरुस्त करते हैं। ये है मौजज़ात, मेरिकल्स। और इसी तरह जब मैं देख रहा हूँ खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे ये सीखने के लिए मिला है। और फिर भी मैं कोशिश में हूँ कि खुदा यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं, फिर खुदा यीशु मसीह आजमाए जाते हैं, आजमाइश में पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील और ये सारी लूका की इंजील, मरकस की इंजील में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये मल्टीपल तरीके से लिखी हुई हैं, और मत्ती भी इस बात की गवाही देता है, लूका भी, मरकस भी बात करता है, और समटाइम्स हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील में भी इसके बारे में बात होती है। मतलब यीशु मसीह आजमाया जाता है शैतान से। फिर क्या होता है इसके बाद? यीशु मसीह गलील में से अपनी खिदमत को शुरू करता है और मनाती करता है कि देखो, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है।
اور ایسے ہم جب چلتے آتے ہیں پڑھتے آتے ہیں پاک کلام کو تو پھر متی کی انجیل اس کا 5 باب میں جو لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی یہی بات جو ہے سسٹر نصرت پاسٹر رشید بھی کر رہے تھے اپنے لیکچر میں پرسوں، اور پھر ایسے ویڈیو بھی میں دیکھی ان کی. متی رسول کی انجیل اس کا 5 باب اس کی 47ویں آیت ہے. پاک کلام میں لکھا ہے اگر تم فقط اپنے بھائیوں کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ بس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. خدا یسوع مسیح کی تعلیم ہے، بائبل کی تعلیم ہے، یہ خدا یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں. میں نے اس لیے شروع سے کیا اس بات کو کہ خدا یسوع مسیح کا بپتسمہ ہونا، خدا یسوع مسیح کی آزمائش کا ہونا، اور پھر خدا یسوع مسیح جو ہے اپنی خدمت کو گلیل میں شروع کرتا ہے، شفا کے بارے میں یسوع تعلیم دیتا ہے، اور پھر تورات کے بارے میں یسوع تعلیم دیتا ہے. خدا یسوع مسیح بیماروں کو چنگا کرتے ہیں، اندھوں کو بینائی دیتے ہیں، اور ان معجزات کے ذریعے، اس شفا کے ذریعے، اس جسمانی اور روحانی بحالی کے ذریعے وہ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جو مسیحا آنے والا تھا وہ آ گیا ہے. اور اس بات کا لوگ اقرار کریں معجزات کو دیکھ کر، شفا کو دیکھ کر کہ یہی یسوع المسیح ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جب خدا یسوع مسیح معجزات کرتے ہیں تو بھیڑ جو ہے خدا یسوع مسیح کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، پیچھے پیچھے رہتی ہے. لوگ اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لوگ اس سے شفا چاہتے ہیں. اور یہاں پر جو ہے ہم پڑھتے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 5 باب 47 آیت میں، جیسے میں نے پہلے پڑھا کہ تم اپنے بھائیوں کے سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائی بہنوں، اس بات پر آپ کو آج دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے پہلے کبھی دھیان نہیں کیا تو آج کریں، دوبارہ سوچیں، دوبارہ میڈیٹیٹ کریں، دوبارہ عبادت بندگی سجدے میں جائیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم صرف اپنے بھائیوں کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے نہیں، کسی اور کو سلام نہیں کرنا، کسی اور کو ٹائم وش نہیں کرنا، بس کسی کو، کسی اپنے کو. غیر قوم کے لوگ بھی یہ کرتے ہیں سب کچھ. اور آپ نے کامل بننا ہے. کیسا کامل؟ پاک کلام میں لکھا ہے جیسا تمہارا آسمانی باپ. اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں رحم دلی کی بات. ہمارا خدا رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے، وہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم رحم کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم ویسے ہیں، یا ہم کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں، یا ہم اپنے آپ کو بہتر کر رہے ہیں، یا ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، یا ہم کوئی رٹی رٹائی باتیں کرتے ہیں. ہمیں اپنے روح میں بیٹھ کر سوچنا ہوگا، ہمیں روحانی حالت میں جانا ہوگا، ہمیں جلالی حالت کو اپنانا ہوگا، تاکہ ہم ان ساری باتوں کو نہ صرف سیکھ سکیں بلکہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کر سکیں، اس کی امپلیمنٹیشن ہو سکے، اس کی عمل درآمدی ہو سکے. اور جب تک یہ سب کچھ نہیں ہوگا شاید ہم جلالی نہیں ہو سکیں گے. رحم ہونا، معاف کرنا، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک کے کام کی موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. پھر اجر ہے، کاشوا میں بتایا جاتا ہے، ابھی بھی آپ پڑھیں گے. پھر اسی طرح متی کی انجیل اس کا 7 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے اور جب تیری ہی آنکھ میں شتیر ہے تو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے لا تیری آنکھ سے میں تنکا نکال دوں. ہمیں دیکھنا ہے اپنے آپ کو. جب میں اپنے آپ کو صحیح کر لوں گا، اپنے آپ کو درست کر لوں گا، پھر میں کسی دوسرے کو سکھا سکوں گا. اگر وہی کمزوریاں اور وہی لچاریاں مجھ میں ہیں، میں دوسرے کو کیا سکھاؤں گا. بہت ضروری ہے کہ ہم کسی دوسرے پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی آنکھ کو صاف کریں. جو بیم، جو شتیر ہماری آنکھ میں ہے اس کو پہلے نکالیں. پھر جو تنکا چھوٹا سا ہے کسی اور بھائی کے، کسی اور رشتہ دار کے، کسی اور محلے دار میں، کسی اور کلیسیا کے لوگوں میں، پھر اس پر ظاہر کریں، اس کو کہیں بھائی میں تیری آنکھ کو صاف کر دوں، یا میں تجھے راہ بتاتا ہوں،
میں تجھے راہ دکھاتا ہوں، میں سکھاتا ہوں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل میں یسوع جو تھا ویران جگہوں پر چلا جاتا تھا، دعا کرتا تھا اور میڈیٹیشن کرتا تھا، اور ایسی قسم کی باتیں ہم دیکھتے ہیں. لیکن اب ہم اس زمانے میں بھی نہیں ہیں. ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بیابان میں چلا جائے. میں دعا کرنے جا رہا ہوں، فیاض میرا نام، میں دعا کرنے جا رہا ہوں بیابان میں، ایسے میں دروغ گوئی کروں، ایسے میں جھوٹ بولوں، ایسے لوگوں کو باتیں سناؤں. نو، دس از ناٹ فیئر. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے. ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر، شاید اپنی رضائی میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، شاید کلام کرتے ہیں. اب کہ ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے؟ یسوع جو تھا وہ بیابان میں جاتا تھا، ہم بیابان میں نہیں جاتے. ہم ایسا نہیں ہو سکتے، ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. ہی از دا جیسس کرائسٹ. وہ یسوع المسیح ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. وہ لاسانی ہے، اس کی کوئی دوسرا مثال نہیں بن سکتا. وہ روح ہے، اس پر خدا کا روح تھا. ابھی ہم بہت کمزور لوگ ہیں، بہت ویک لوگ ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بات شروع کی ہے، بھائیوں کو سلام کرنا ایسا. تو اسی طرح آگے جب پڑھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 48 آیت میں، وہاں پر لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 48 آیت ہم دیکھیں گے. پاک کلام میں سے جن کے پاس پاک کلام ہو وہ کھول کے دیکھ سکتے ہیں. 48 آیت میں لکھا ہے، وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئے اور اس کی ماں نے اسے کہا، بیٹا تو نے کیوں ہم سے ایسا کیا؟ دیکھ تیرا باپ اور میں کڑتے ہوئے تجھے ڈھونڈتے ہیں. اس نے ان سے کہا، تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب یسوع لڑکا ہی تھا تو وہ ہیکل میں جاتا ہے اور اس کے ماں باپ جو ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے، اور وہ اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں، اس کے ماں باپ سے ڈھونڈتے ہیں. اور جب اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ تیرے ماں باپ تجھے ڈھونڈتے ہیں، تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ ہونا یا اس کے ہاں ہونا ضروری تھا. تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ ہمیں بھی آج جو ہے اپنے باپ کے ہاں، اپنے روحانی باپ کے ہاں، اپنے استاد کے ہاں ہونا بہت ضروری ہے. ہم اس کی رفاقت میں وقت گزارے، اس کی بندگی میں وقت گزاریں، اس کے جو عبادت خانے اس میں وقت گزاریں، تو پھر جو ہے خدا جو ہے اپنی برکات کو ہم پر جاری کرتا ہے. اور اسی طرح جو میں نے پہلے بات کہہ دی کہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی اپنا منہ برساتا ہے، جو ان پر بھی مہربان ہوتا ہے. یہ بات جو ہے ہم پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 35 آیت میں، اور اس سے آگے بھی پڑھیں گے تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو اور سیکھ سکے پاک کلام میں سے. اور یہ وہ تعلیم ہے جو اناجیل میں یسوع مسیح جو ہے وہ خود لوگوں کو بتاتے ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں، اور وہ لوگ، وہ بھیڑ جو اس کے پیچھے پیچھے ہجوم ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں. لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 35 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں. پاک کلام میں لکھا ہے، مگر تم اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور بھلا کرو اور بغیر نا امید ہوئے قرض دو، تمہارا اجر بڑا ہوگا اور تم خدا تعالیٰ کے بیٹے ٹھہرو گے، کیونکہ وہ ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے. جیسا تمہارا باپ رحیم ہے تم بھی رحم دل ہو. پاک کلام اور خدا یسوع مسیح ہمیں ایسی تعلیم دے رہا ہے رحم کی. جیسا وہ رحیم ہے، جیسا وہ رحم کرتا ہے، ویسے ہی ہمیں رحم دل ہونا چاہیے. اور 39 ورس آگے ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی، کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا دونوں گھڑے میں نہ گریں گے؟ اور یہی بات ہم مین جو آئیڈیا ہے آج کے میسج کا، آج کے سرمن کا، کہ ہمیں اپنی
आंख के शतीर को निकालने हैं। अगर मैं ही ब्लाइंड हूं और मुझे कुछ पता नहीं है और मेरे पास वो ब्लेसिंग नहीं है और दूसरों में मैं वो ब्लेसिंग बांटता हूं, तो कैसे ये पॉसिबिलिटी है? अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। और मैंने एक वीडियो पर देखा कि एक ब्लाइंड पर्सन है, वो लीड कर रहा है और उसके पीछे 6, 7, 10 और भी ब्लाइंड हैं, और जब वो गिरता है तो क्या होता है? सारे ही गिरते हैं। और अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। हमें अपनी रूहानी आंखों को खोलना है। खुदा यीशु मसीह जो है और खुदा जो है, पुराना अहदनामा जो है, नया अहदनामा जो है, वो हमारी रूहानी जिंदगी पर ज्यादा जो है सेंट्रलाइज करता है, फोकस करता है, एडवाइस करता है कि हम अपनी रूहानी बसारत को, रूहानी आंखों को खोलें, हम ब्लाइंड ना रहें, हमारी हर चीज जलाली हो, रूहानी हो। क्या होगा अगर हम ऐसा करेंगे? अंधे बनकर जिंदगी गुजारेंगे, अपनी रूहानी आंखें नहीं खोलेंगे, तो फिर क्या होगा? गड्ढे में गिरेंगे, मुश्किल में जाएंगे, बीमारी में जाएंगे, और बहुत सारे इश्यूज जो लाइफ के प्रॉब्लम है उनमें हम जाएंगे। मैं इस बात को आज पढ़ रहा था, कल भी एक मोहल्ले में डेथ हो गई थी, उसके जनाजे की इबादत में भी मैं शामिल हुआ। आज एक मोर्निंग सर्विस भी थी, तो वहां पर खुदा के खादम कलाम सुना रहे थे, और ये बात मेरे दिल में भी थी। मैं आपसे शेयर करूंगा जो मैं ये बात कर रहा हूं कि हम जो है सारी काम, सारी बातें इसलिए करते हैं, अपने दुनिया में आने का मकसद जानते हुए। खुदा ने एक इलाही मंसूबा तैयार किया, जिसमें जो गुनाह हमारे पहले बाबा आदम से हुआ, उसकी वजह से मौत दुनिया में आई, कमजोरी दुनिया में आई, मजबूरी, लाचारी दुनिया में आई। और फिर क्या हुआ? खुदा को अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजना पड़ा। वो ऐसा बर्रा जो हमारे गुनाहों को उठाता है। और आज हमें किस चीज की जरूरत है? हम उसकी तालीम पर चले और उसके मसीहा होने का इकरार करें। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। और इससे पहली आयत अगर 12वीं आयत पढ़ते हैं, लिखा है, लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा, यानी उनमें जो उस पर नाम पर ईमान लाते हैं। खुदा के फरजांद बनना चाहते हैं, खुदा के फरजांद जिस्मानी तौर पर नहीं, खुदा के फरजांद वो वाले फरजांद जो रूहानी तौर पर बनेंगे, खुदा के फरजांद जो ईमान लाएंगे, खुदा के फरजांद जो किरार करेंगे, खुदा के फरजांद जो अपनी जिंदगी को संवारेंगे। ऐसे नहीं कि हम बार बार जो तंबीह पाकर फिर गदर कशी करते हुए उन्हीं रास्तों पर चले, उन्हीं बातों पर चले, और हम कहें खुदा रहीम है, खुदा माफ करने वाला है, खुदा हमें माफ कर देगा, खुदा हम पर रहम कर देगा। ऐसा नहीं कि हम बार बार गलती करते जाएं, बार बार गुनाह की जिंदगी में जाएं। इस बारे में बहुत सारी बातें वर्सेस पाक कलाम में हैं। और जहां पर लिखा है कि अगर आप खुदा के फरजान, कौन से? रूहानी फरजान, जो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और हम देखते हैं इसी तरह पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 50 आयत में लिखा है कि पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 50 आयत में लिखा है, आए भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, जब हम खुदा की मोहब्बत का, खुदा के रहम दिल होने का, खुदा की मुआफी का जिक्र करते हैं, और हम जानते हैं पाक कलाम में लिखा है कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी हम पाएंगे। किस तरह हम खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे, किस तरह हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे? पाक कलाम बताता है, पौलुस रसूल बताता है, पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 50 आयत में, आए भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते।
हमें रूहानी बनना है, हमें जलाली बनना है, हमने पाक रूह को लेना है और पाक रूह हम पर होना चाहिए, पाक रूह हमें नजर आना चाहिए, पाक रूह हमारी जिंदगियों से नजर आना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते हमारे हर अमल से। इसलिए फना बका की वारिस नहीं हो सकती, फना बका की वारिस नहीं हो सकती। लिहाजा हमें जो है अपने आप को, अपनी सूरत को बदलना है, और जो हमारा मसीहा हमें तालीम दे रहा है, हम अनाजील का मुताला कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, हर कोई अपने तौर पे भी करता है। पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि खुदा जो है वो हमें इस तरह देखना चाहता है कि हम ये ना सिर्फ अपने अपने लोगों को, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, चैरिटी बिगिंस एट होम। भाई पाक कलाम ये बता रहा है हमें, लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 19, 20, 21 आयत को स्टडी कर लें। वो शिगिर्द जाते हैं खुदा यीशु मसीह के पास, उसे कहते हैं तुझे नहीं पता तेरी माँ और तेरे भाई जो है तुझे ढूंढ रहे हैं, बाहर खड़े हैं। कहते हैं मेरी माँ और मेरे भाई तो ये हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, पाक कलाम बता रहा है, लूका की इंजील उसका 8 बाब उसकी 19, 20, 21 है, जरूर स्टडी करें, इस रेफरेंस को जरूर चेक करें। तो मेरी माँ मेरे भाई वो है जो खुदा का कलाम सुनते हैं, जो उस पर अमल करते हैं। हम हमारे लिए हमारे बहन भाई तो हमारे वही हैं, सगे बहन भाई, चाचा ताया वही, रिश्तेदार वही, दूसरे तो नहीं है। हम अपनी कलीसिया के लोगों को शायद कभी कभी पीछे कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों को आगे कर लेते हैं। आज इस आयत को सामने रखते हुए एक बार फिर हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हम खुदा का कलाम सुनने वाले हैं, क्या हम खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं। और हम वैसे पढ़ते हैं, मुबारक है वो जो शरीयत की किताबों की बातों को सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है और उस पर अमल करता है। क्या हम मुबारक बनना चाहते हैं? हम पर सवालिया निशान है। ये क्वेश्चन मुझ पर भी है, ये क्वेश्चन बाइबल पढ़ने वालों सब पर है कि क्या हम खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अजीजों, जरूर इस पर गौर करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। खुदावंद इस कलाम की वसीला से आप सबको और मुझे भी बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन। अभी हमारे साथ मारिया है और यह प्रोबल है, उनसे मैं कहूंगी कि वो खुदावन के कलाम के लिए दुआ करें, जो हमने खुदावन का कलाम सुना है उसके लिए बरकत के लिए दुआ करें। मारिया प्रोबल। जी आंटी। आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तेरे ला तब्दील कलाम के लिए खुदा, जो हमने तेरे बेटे यीशु मसीह के बारे में सीखा है खुदावन, तेरे कलाम को सीखा है खुदावन, जिंदगी की बातों को सीखा है। फजल बख्श खुदावन के इस कलाम को खुदा हम अपनी जिंदगी में बसा ले खुदावन, ताकि हम तेरे लायक हो जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा। जहाँ जहाँ खुदावन ये कलाम सुना जाए खुदावन, लोग बाबरकत हों खुदा, बरकत पाएं खुदा, और अपने पाओ खुदावन बुरे कामों को छोड़ के खुदा तेरी हमेशा की जिंदगी की तरफ आए खुदा, और तेरी हमेशा की जिंदगी उनमें जारी हो जाए, और तेरा कलाम ये हमारा पीछा करता रहे खुदा। छू और बरकत दे, मसीह यीशु के फतेह नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन।